Hi guys, welcome back to the channel. So last class we have started candidiasis and we have started first type, that was pseudomembranous candidiasis, and we have finished that. Today we'll be starting atrophic candidiasis. Okay, let's start. Atrophic candidiasis, it is a red velvet like tender palatal mucosa under a denture. So first thing, it is mainly seen in edentulous patient. Second thing is it is seen under a denture. How does it appear? It appears as a red velvet like tender. The high frequency low intensity trauma of a denture surface compressing the palatal mucosa. तो जो डेंचर से जो ट्रॉमा होता है वो कंप्रेस करते हैं पैलेटल म्यूकोसा को, जिसकी वजह से ये होता है. एंड देन द कैंडिडा एल्बिकन्स विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट बिकम पैथोजेनिक एंड invade into that. Okay. Another type of atrophic candidiasis is angular cheilitis, perique, which often begins when a loss of vertical dimension creates a constant moisture and cracking at the commissure and predisposes the tissue to candida proliferation and invasion. Okay. सो एट्रोपिक कैंडिडियासिस एक हो गया जो डेंचर के नीचे पाया जाता है. सेकेंड है जो लिप कमिश्चर के इधर पाया जाता है, विच इज़ नोन एज एंगुलर चिलाइटिस और पेरिके, which begins when a loss of vertical dimension creates a constant moisture and cracking at the commissure. तो ये क्या होता है कि मॉइस्चर की वजह से मॉइस्चर होता है प्रेजेंट एंड देयर इज क्रैकिंग ऑफ द कमिश्चर, तो उसकी वजह से इट प्रीडिस्पोजेस टू कैंडिडा प्रोलिफरेशन एंड इन्वेशन. तो जो क्रैकिंग और मॉइस्चर हो गया, दे प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट फॉर द normal candida albicans to proliferate and invade and become pathogenic. Now, in this form, the commissures are tender, fissured, and often crusted with some skin erythema. Found in individual with chronic lip licking habit, also seen as extension of intraoral candidiasis. So जिनको लिकिंग हैबिट होती है उनमें जनरली पाया जाता है, क्योंकि उसकी वजह से वो मॉइस्चर क्रिएट होता है एंड देन क्रैकिंग एंड देन proliferation and invasion. And it is also seen as an extension of intraoral candidiasis. Intraoral है तो भी वो लिप के कमिश्चर्स पे हो सकता है. Okay, this was the second type, that was angular cheilitis. Now third type of atrophic candidiasis is median rhomboid glossitis. ओके पहले मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस को डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस के अंदर माना गया था, बट वी हैव नॉट सीन एनी कोरिलेशन एंड कोई भी मतलब वो अगर डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस है और आज की वजह से हो रहे तो यंग इंडिविजुअल में होने चाहिए. दिस इज़ नॉट द केस. सो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एट्रोफिक कैंडिडियासिस involving the dorsum of tongue in a diamond shaped pattern. A more common diffused form known as atrophic glossitis also involves the tongue and is frequently associated with burning pain. So it involves the median rhomboid glossitis, involve the dorsum of the tongue in a diamond shaped pattern. And इसका जो diffuse form होता है which is known as atrophic glossitis and it is associated with burning pain. Now, the third type of candidiasis, first was pseudomembranous, second was atrophic candidiasis. Atrophic candidiasis में we have seen angular cheilitis and median rhomboid glossitis. Now, the third type is hyperplastic candidiasis. Clinically, it will be less likely to be scraped off as it become associated with an acanthotic hyperkerotic response. तो ये जो हाइपरकेरोटिक रिस्पॉन्स होता है और एकैंथोटिक रिस्पॉन्स होता है उसकी वजह से इट डजंट स्क्रैप आउट. इट विल बी लेस टेंडर एंड विल मिमिक अ लाइकन प्लानस ऑफ वेरिकस कार्सिनोमा और इवन अ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा. Okay, it will mimic the lichen planus, verrucous carcinoma or squamous cell carcinoma.
the hyperplastic candidiasis. And biopsy is planned to rule out. So we do biopsy to rule out if it is candidiasis or it is any carcinoma. Okay, that's all for today. We'll be dealing one or two more other types of candidiasis in next class. Till then, like, share, subscribe and comment. Bye.